Good morning, everyone. I hope you all can hear me clearly. Morning, ladies and gentlemen. Yes, Jerry ji, good morning. Good morning. We will wait few minutes and then we'll start the session. I hope we all made good money yesterday. आप सबको एंट्री मिल गई थी and we made good money. काफी लोगों ने कल पैसा बनाया है and I hope you all are one of them. मेरी आवाज आ रही है, right? You can just write yes in the chat if you can hear me clearly. Okay. Okay, thanks for the confirmation. Let's just wait for our expert to join. आज इस हफ्ते का आखिरी सेशन है, आखिरी मॉर्निंग सेशन, and soon we will do our Sensex expiry with Madhur sir. I'm just setting up one thing. Update regarding BTST. Yes, definitely we will give you the update regarding BTST, and we have Shivangi ma'am with us. Shivangi ma'am, you can accept the invite and join the stage. Morning ma'am, I hope you can hear me clearly. Very good morning. I can hear you. Thank you so much. Great. So we are starting in a minute. Yeah, sure. You can share the screen meanwhile. Morning, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal. You see me here daily with different experts. We have two kinds of session, one at 9:30 a.m., one at 2:30 p.m. जो सुबह का session होता है वो हमारा cash के around focus करता है, stocks, swing trade, conviction delivery idea. And if we get a chance, we share a derivative trade if we get a chance and if we have a good opportunity. Meanwhile, morning session mein we try to take as many stock coins as possible, and whenever you are asking something, jaisa Sushma Devi ji ne yahan likha hai, all of them are buying at 1398 200 shares, please view. तो जितना detailed आपका question होगा उतना detailed हमारा answer होगा. And at 2:30 p.m. जो हमारे derivative trade होते हैं, expiries basically we play around that. Yesterday we made a good profit, we made a fine profit in Fin Nifty, Bank Nifty. We made a good profit in BankX also. So इस हफ्ते we are on a profit streak. We hope आज वो continue हो. Along with me we have our expert Ms. Shivangi Sharda. आपने इनको काफी सारे news में देखा होगा. Where she gives her market outlook. उनका खुद का public presence काफी ज्यादा है. People call her the Nifty Queen. And let's hope कि आज morning में she give us some good intraday and we make some good money. Thank you so much, Anuj, for such a warm welcome. Can you see my screen? Because I think not yet. Yeah, but I'm just trying to share my screen. Is it visible now? No, screen share ho rahi hai, then it's getting cancelled automatically. Some issue then. Okay, so I was just trying to actually share the screen of my software, but since it's not happening, so I'll just share the normal screen. Okay. It works. Yeah, we can see now. This is visible. Yeah. Okay. This is just a normal trading view screen. Okay. So, guys, hello. Good morning. Welcome to the morning session. It's Friday, and it's raining quite heavily here in Mumbai. So, आज office में भी हम देख रहे हैं कि कम attendance है थोड़ा. But I'm seeing Stockholm attendance is good. YouTube attendance is good, so that is good. But overall, let's discuss the market first, and then we'll dive into stocks. Yesterday's Nifty Hero Zero session was quite profitable for many, and we couldn't discuss a lot of stocks क्योंकि हम Hero Zero option में ही लगे हुए थे. So today I will try to cover most of the stock queries as well. So first, let's dig into what's happening in Nifty. एक पूरा perspective ले लेते हैं index का, फिर हम stock specific action में dive in करेंगे. So right now we are seeing that Nifty opened a little on the softer note. कल 24,800 पे close हुआ था. आज उसके ऊपर हम जरूर open किए हैं, but the opening and the high levels are almost the same. So now it needs to cross that opening level for the next
अच्छी खासी अपमूव के लिए, एक मोमेंटम वाली अपमूव के लिए, बट अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत स्लो मूवमेंट रहेगा, थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगा थ्रू आउट द डे, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट इट क्रॉसेस 24,850 जो कि इसका ओपनिंग लेवल है, टू टर्न इनटू कॉल साइड फॉर अ गुड मोमेंटम। बट अगर वो टर्न नहीं होता है तो हम थोड़े बहुत रेंज में रहेंगे। इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर पुट बाइंग और समथिंग, बट थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम वहाँ वेट एंड वॉच कर सकते हैं। Overall, indices are quite positive. It's given a range breakout on the daily frame और उसके बाद follow up भी हमने काफी अच्छा strong देखा है। कल का एक काफी अच्छा strong candle बना, आप ये देख सकते हो कि this was a very strong bullish candle and it was एक दो दिनों के doji formations के बाद जब ऐसा strong bullish candle बनता है, यानी कि momentum जो है वो likely है कि continue होते हुए दिखेगा। बट नाउ द कंसर्न इज कि ट्यूसडे हम बजट की तरफ मूव कर रहे हैं, सो सम व्हाट वॉलेटिलिटी विल बी देयर। आइए देखते हैं इंडिया विक्स में क्या हो रहा है। सो yesterday it was slightly up, today it's again slightly down, तो कुछ ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। इंडिया विक्स इज फ्लैट ओनली। यहाँ अगर इंडेक्स थोड़ा बहुत आज हम देख रहे हैं कि सॉफ्टनेस है और इंडिया विक्स अप होता, लाइक अगर इट वाज मे बी अबव 4 to 5% अगर ऊपर होता तब हम वहाँ पे सेल स्टांस में जाते, but since the levels are comfortable, even the indices are holding at the higher zones, तो हम वहाँ सेल के स्टांस में नहीं जाएंगे। So of course अगर सेटअप चेंज होता है we will change, but right now as of now सेल स्टांस नहीं लग रहा है, so we'll stick to निफ्टी कॉल, या हम ऐसे सिनेरियो में स्ट्रैटेजीज भी कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आज सेंसेक्स एक्सपायरी है तो हम सेंसेक्स पे भी फोकस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, देन विल कम टू सेंसेक्स। बैंक निफ्टी हैज बीन कंसोलिडेटिंग फ्रॉम द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स। आप ये देखो कि फ्रॉम द लास्ट 9 सेशंस इट्स काइंड ऑफ इन अ रेंज एंड पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई खास फॉलो अप नहीं है, इवन दो इट्स ट्राइंग टू होल्ड अबाउट 52,500, वहाँ पे फॉलो अप नहीं होने के कारण देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अगेन रेंज बाउंड मूव। सो कैन यू सी दिस जोन, ये जोन जो है बैंक निफ्टी ये निकाल ही नहीं पा रहा है। सो इफ इट नाउ I hope you can see the lines which I'm drawing, right? So ये रेंज जो है बैंक निफ्टी निकाल ही नहीं पा रहा है on the daily frame, right? The lines are really thin, but I'm sure आप देख पा रहे हो और आइडिया लगा पा रहे हो what I'm referring to. So now it needs to come out of this consolidated band for the next up move towards 54,000. पर इम्पोर्टेंट है कि ये 53,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे, एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे यही रेंज हम प्ले आउट करेंगे, रेंज बाउंड मूव है, सो वी कैन गो फॉर स्ट्रेटजीज लाइक बुल कॉल स्प्रेड या बटरफ्लाई स्प्रेड वगैरह। सो बैंक निफ्टी कैन बी टैकल्ड इन दैट वे। Now let's talk about Sensex. What's happening in Sensex? Sensex in line with the broader market रहता है। काफी जो clues है वो आप निफ्टी से ले सकते हो while trading in Sensex. But remember that Sensex options में swings बहुत होते हैं, so one has to be really careful while trading that. जितना हम निफ्टी में देखते हैं उससे भी ज्यादा होता है swings, बैंक निफ्टी से भी ज्यादा swings होता है। So please keep your risk reward in hand while trading in options, right? Okay. So Sensex is also open positive. We touched a new lifetime high of 81,587 और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत softness जरूर देखने को मिल रहा है, but good part is that it's holding above 81,000. तो जब तक ये 81,000 के ऊपर hold करता है, we will go with the buy stance only, and we will obviously look at some of the options as well. I think सुबह के the right approach to start an expiry is starting with अगर momentum बहुत अच्छा है तो हम buying side में जा सकते हैं, but a start like this where the start is little dull तो हम वहाँ strategies के साथ start कर सकते हैं, and then throughout the day we can play with some strike और उसको हम churn करते रह सकते हैं while keeping in mind the levels. So
this is how we can plan out. मैं आपको quickly, I will also tell you the strikes which you can look out for in Sensex. ताकि आप, you can play it out in the entire day. Of course, we have the evening, afternoon session as well for Sensex expiry. तो वहाँ पे भी आपको काफी अच्छे insights मिलेंगे. So right now, Sensex is trading at 81,200, 300 odd levels. So we can, look at 81,400 call. अगर हम ये buy करते हैं and we sell 81,600 call, this this spread you can do bull call spread by buying 81,400 call and selling 81,600 call. तो ये आपके 50 रुपीज के प्रीमियम में बैठ जाएगा because you're buying a call at 150, you're selling at 100. तो 50 रुपीज के स्प्रेड में ये पूरा स्ट्रैटेजी बन जाएगा. And the maximum reward that you can get in this is 150 points, and the maximum risk that you will incur is 50 points. So 150 points के reward के लिए ये 50 points का आप costing के साथ ये strategy में enter कर सकते हो. So Anuj, I think you can pin this. Sensex bull call spread by buying 81,400 and selling 81,600 at a cost of 50 points with a maximum reward of 150 points. So this you can do. Patel is saying yes, premium DK ho jayega because obviously it's expiry today, so premium DK obviously hoga. So we are doing this strategy so that we can play the upside move क्योंकि हम यहाँ पे expect कर रहे हैं कि ये upside जाएगा. And with just a cost of 50 points, you can get an exposure for 150 points. ये एक advantage है of doing this strategy. Next is why we're doing it is because हम upside expect कर रहे हैं, but at the same time we don't want to take the entire risk of buying a call for the entire day because obviously time decay होगा, expiry है. So at the same time we are selling higher strike call option as well. तो हमारा costing काफी कम हो जा रहा है वहाँ पे. Of course reward भी कम हो रहा है, but risk is also reducing to a lot of extent. So that is why we are doing this strategy. Okay, ma'am, आज ninja technique. Okay, I will just try to do a ninja technique, but अभी के लिए तो यही strategy है which I will recommend. Ma'am, do we have any stocks on radar? Yes, we'll just quickly go to the stocks now. We've discussed the indices, सब कुछ हमने कर लिया है. Now let's quickly also go into the stocks. आज जो stocks है mainly radar पे वो IT space में से ही है, but we look for specific names as well. So let me just look at Infosys first. IT has been driving the entire market. Okay, Infosys is witnessing some sort of gap up के बाद थोड़ा बहुत profit booking हो रहा है. So let's go to some other stock, Excite, because it's not viable कि हम ऊपर higher zones पे भी buy करें. So yes, this stock is looking quite positive. This is on my radar and looks quite good. So Excite पे आप देखो for an intraday swing, right? So this is looking quite positive. I'll just quickly tell you the levels as well. But let me just check the derivatives data. इसमें एक बार. Okay. Yes, so this stock looks quite nice, and आप देख रहे हो कि it's moving from its consolidative band and पूरा तैयार कर रहा है, तैयारी कर रही है निकलने के. Let's look at what Nifty Auto is doing ताकि हम एक top down approach कर सके. Okay, Nifty Auto is sort of consolidating, but there is it's supporting वो जो previous day का low है उसको respect कर रहा है Nifty Auto, so somewhat there is strength over here. So we can go with Excite over here, right? This stock is looking good for targets of 580 immediately. 580 first target है और 600 second target है. Excite को आप buy कर सकते हो 580 and then 600 के targets के लिए, and 555 would be a stop loss. So you can pin this, Anuj, for an intraday swing, Excite Industries.
राइट. मार्केट इज समवॉट कंसोलिडेटिंग, तो हमें ऐसे मार्केट में वैसे ही स्टॉक्स के साथ जाना है जो थोड़े बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड ओवरऑल मूव अच्छा है. अगर आप इसका वीकली स्ट्रक्चर भी देखो, जो मैंने देखा है, is also holding quite well from the last 4 weeks. It's holding at its support base जो immediate इसका बना हुआ है, and stocks which consolidate for the longest of times and higher zones पे specially hold करते हुए दिखता है, जो उसका upside काफी अच्छा potential बनते हुए दिखता है. So Exide is on radar, right? Okay. For intraday swings. Now, of course, I am getting a lot of queries for IT stocks as well. IT has been driving. एक अच्छी बात ये है कि परसों के एक थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट ग्लोबल मार्केट्स के कारण भी हम देखा कि Nasdaq was quite down. बट कल के सेशन में हमारे जो आईटी स्टॉक्स है वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं किए इस फैक्ट में कि Nasdaq was down. So this is a good part that our IT stocks have remained positive, whereas the global IT stocks have shown profit booking और वहाँ पे negative bias हुआ था. So our IT stocks have remained unaffected by it, which is quite positive. So some of the mid cap IT names जो है काफी Infosys TCS ने काफी अपना एक अच्छा move दिखा दिया है, but of course you can look out for some of the mid cap names as well. Even names like HCL Tech or Dixon. Dixon has shown a little bit of profit booking, so HCL Tech is something which can be kept on radar. So ये stocks आप देखना, but overall IT stocks have done fairly good. अच्छा momentum है, right? Okay. So yeah, I think now Anuj, I'll take a few questions. Sure, ma'am. I guess we can start with the update on the BTST जो हमने कल दिया था. जी. So we had two BTST, Birla Soft and India Cement. Okay. So let's look at Birla Soft. It's opened positive, but opening के बाद 760 touch करने के बाद थोड़ा बहुत profit booking हुआ है वहाँ पे. So we've seen that 760 was a bit of a hurdle over here. Now what one can do is 740 के एक stop loss के साथ आप hold कर सकते हो. 740 जो कि आज का लो के आसपास है, उसका एक stop loss आप maintain कर लो. One can maintain the stock क्योंकि हमारे buying zone से तो अभी भी पास में ही है, right? Okay. Next is India Cement. India Cement is also trading flat today, slightly near its buying zone only, but flat ही है काफी. So one can just wait a little while over here because opening तो fairly okay हुई है, कुछ great नहीं है, but it's not negative as well. So one can wait for some time, I believe, क्योंकि Nifty जो है वो flat है आज और वो strength नहीं दिखा पा रहा है. तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रेशर है दूसरे स्टॉक्स में भी. सो वन कैन वेट फॉर अनदर 15-20 minutes एंड देन टेक अ कॉल. बट फिलहाल हम काफी कंफर्टेबल है एट द सेम बाइंग जोन्स ओनली, सो वन कैन बी देयर. Okay. So, ma'am, I'll just pull up to the top and start with the queries. NBCC. Yeah, NBCC. Okay, let's look at NBCC. अब इसका जो overall weekly structure अगर हम देखें, so it's consistently making higher lows and supports काफी अच्छी तरह से higher zones की तरफ shift हो रहे हैं. Even on the daily frame we are looking at good buying. थोड़ा बहुत consolidation जरूर है after the one good swing that we got, but overall I think 175 would be a make or break zone over here. 175 के ऊपर जब तक hold करता है तब तक index looks quite positive, नहीं तो उसके नीचे थोड़ा बहुत हम softness फिर वापस देखेंगे. So 175 is the level to watch out. Now Patel is asking, ma'am, look at put. I told early you send. अच्छा ठीक है.
तो बेसिकली पटेल जी और सभी को वी लुक एट बोथ द कॉल्स एंड पुट्स व्हाइल वी आर एनालाइजिंग. हम पूरा अनबायस्ड वे से एनालाइज करते हैं एंड वट एवर कन्विक्शन वी हैव हम वही आपको इस फोरम में बताते हैं बिकॉज एज एक्सपर्ट्स इट्स आवर ड्यूटी कि हम आपको राइट गाइड करें. राइट, एक कॉन्शियस एफर्ट रहता है हमारा. सो वी ऑलवेज ट्रैक एवरीथिंग and then we always try to give the best of the lot. Okay. Next we have a question from Sushma Devi ji. उन्होंने काफी समय पहले पूछा था. Oro Pharma bought at 1398, 200 shares. Okay, Oro Pharma space is witnessing some profit booking from the last 2 sessions, but Oro Pharma का देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे. जी, दो सेशंस के बाद आज वापस से थोड़ा बहुत डोजी फॉर्मेशन हो रहा है. सो नाउ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज गाइस दैट निफ्टी जब भी थोड़े बहुत फ्लैट रहता है या थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता है वहाँ फार्मा और कंजम्पशन फ्रंट पिक्चर में आ जाता है. सो वी आर सीइंग दैट 2 दिन निफ्टी में काफी अच्छा मूव था तो 2 दिन यहाँ पे फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग थी. बट आज थोड़ा फ्लैट है तो आज ये वापस रिवाइवल मोड में आ रहा है. सो नाउ 1350 के ऊपर एक अच्छा स्विंग मिल सकता है. आई वुड रेकमेंड अगर बाइंग के लिए आप देख रहे हो तो 1350 के ऊपर आप बाय कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट स्विंग. बट उसके और जो लो है आज का 1330 दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर यू. राइट, भास्कर इज सेइंग सेंसेक्स डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया. सो यू कैन सी हमने क्या पिन किया है. आप पिन मैसेजेस भी देख सकते हो. मैम जोमेटो बाइंग 227 190 क्वांटिटी. ओके, जोमेटो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. इट्स अ मस्ट हैव पोर्टफोलियो स्टॉक. The kind of returns it's given in the last 1 year has been very remarkable. ऑफ कोर्स आपने अगर डे ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे स्विंग के लिए लिया है तो थोड़ा बहुत आप अटक सकते हो बिकॉज कंसोलिडेट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है यहाँ पे बट कंसोलिडेट कर रहा है. सो यू विल हैव टू हैव पेशेंस इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर. बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो 3 months or 6 months or more than that, then the stock is very good. You can continue holding. Neha is asking PEL. Okay. PEL हम just अभी इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं. Okay, there's some problem. लोड नहीं हो रहा. Okay, there's some issue, system issue. Outstanding कितना है system? Okay, no worries. Dhaval Mali ji, I've read your message. Thanks for the feedback. I'll get this checked by the tech team for sure. Okay, PEL is taking time to load here, but मैंने check कर लिया है structure इसका. तो long term there is some sort of profit taking at higher zones. तो पिछले 4 हफ्तों से consistently ये बढ़ा है stock. But after that we've seen some sort of consolidation. So PEL अगर आप long term के लिए रखे हो तो it's okay, but intraday के लिए I would suggest that you can now book some profits. Ma'am, IRIDA 170 quantity at 270. What to do? Okay, IRIDA has been the IPO of the year. Clearly यहाँ पे it's been the performer. अगर हम इसका 6 महीने में रिजल्ट 6 महीने का रिटर्न्स देखे तो दिस स्टॉक हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ अराउंड 180% which is quite remarkable. So definitely IRIDA is quite positive. 3 दिनों के एक लोअर हाइज फॉर्मेशन के बाद वापस अब stock is getting ready for a up move. So right now the stock looks ready for another 300 levels. तो 300 के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं. There's some problem with the chart over here guys, but I'm checking it alternatively. यार मैं आपको एडवाइस कर दे रही हूँ.
देवेंद्र जी, आई एम नॉट श्योर विच व्हाट्सएप ग्रुप यू आर टॉकिंग अबाउट. हो सकता है कि वो आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं या आपके जो एडवाइजर हैं, उन्होंने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो. एज अ स्टॉकहोम कम्युनिटी वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप, एंड एज मोतीलाल ओसवाल ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अ टेलीग्राम चैनल एंड वी हैव स्टॉकहोम जहाँ पे हम ट्रेड्स देते हैं मेजरली ऑन स्टॉकहोम. So probably you can ask your RM, to probably share some more trades, but it's best if we join these sessions. Ma'am, Guys, also, I'll just take this up to inform everybody that we don't have any WhatsApp groups. From Motilal Oswal, आपके जो advisor के साथ आपका होगा वो हो सकता है, but at Motilal Oswal level, we do not have any WhatsApp groups, and many frauds are happening where people are impersonating us. काफी लोग ऐसे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बन के ऐसे पैसे मांग रहे हैं. सो प्लीज डोंट फॉल फॉर इट. डू नॉट फॉल फॉर एनी ऑफ द क्लेम्स. आप कहीं भी हम देखोगे हम व्हाट्सएप में पैसे नहीं मांगते हैं किसी से भी. सो डोंट ट्रैप. एंड आप अपने लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी ये स्प्रेड करना that please do not transfer money on WhatsApp. It's 100% fraud. So don't do that, and don't believe. I will never call or message anyone, guys. तो हमें यहाँ पे स्टॉकहोम पे ही टाइम मिलता है. So yeah, okay, let's come back. ma'am, premier explosive long term 100 quantity is okay at 802. Sorry, which stock? Premier explosive. Okay, guys, you can be with. Okay, there is some issue with the charts which is happening over here. Okay, so I'm looking at this chart, but कुछ ऐसा खास कुछ दम नहीं लग रहा है इस chart में. One can, अगर आपने fundamentally लिया है तो ठीक है, but technically there is no strength and you can actually look for exiting. Your view on IOC buying at 190. So we have two questions. One is specific that buying at 190. One is a general view on IOC. Okay, IOC has been consolidating from the last 18 weeks now, and इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि there is no momentum at all. Stock में जहाँ भी follow up का try करता है stock यहाँ पे हो नहीं पाता है. So I would recommend that you can, exit. There are many better stocks which are in momentum where you can be and, get a good move. तो आप best movers के साथ रहो. And guys, I had already, discussed कि आप कैसे stock picking कर सकते हो. One can go to the Research 360 website. You can see, which stocks are trending and which stocks are gaining momentum. तो आप वो अप्लाई करके कर सकते हो. XID we had discussed, it's near about at the same levels because Nifty has not yet moved. तो आप होल्ड करते रह सकते हो. But Sensex is also slightly down by 50 points जहाँ से हम डिस्कस करना शुरू किए थे. But overall जो है consolidative view ही रहेगा अभी फिलहाल. Let's hope कि second half में कुछ momentum आ जाए and then we can capture a good hero zero trade as well. But right now Nifty is also near 24,700. तो upper zone से हमने देखा है कि almost 140 points, 130 points का correction हुआ है. But 130 points at this level is quite normal. So there can be like a bounce back from here as well. But the only concern is कि momentum आज नहीं है. Also guys, budget है, so people are keeping a little bit of a caution. Weekend भी है, result seasons भी है. So I would advise कि आप कम positions carry करो over the weekend. आप budget के बाद वापस you can start accumulating positions and start your trading. But stay a little light. ऐसा कर सकते हो आप जितना आप capital allocation करते हो उससे आप slightly कम कर सकते हो so that your risk is also in place. So this would be my advice for the next 2 days. Yeah. I guess that will be all for today.
काफी सारी हमें जनरल एडवाइस भी मिली है हाउ टू मैनेज आवर पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट वीक व्हिच इज वेरी क्रूशियल because of the budget. We have given 2 trades, so that will be all. Keep a track on it, and we'll see you again at 2:30 p.m. with our expert Madhur sir, the Sensex king apparently, because on the streak काफी लंबी हो चुकी है. And we hope कि we will have a profitable session जैसा मैम बता रही है. That will be all, guys. Thanks a lot. Thank you, Shivangi ma'am, for joining in. Thank you so much, guys. I know बहुत सारे questions है, but हम try करते हैं. That is why we are having so many sessions on Stockhomo every day, ताकि हम आपके stock queries ले सके, हम आपको advice कर पाए. But of course, we are available on our social media handles as well. But आप please fake handles को आप मत believe करना, right? So stay with the verified ones only, and join us and see us on Stockhomo again. Thank you, everyone.